आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टॉपिक थोड़ा अजीब है और मुझे उम्मीद है कि आपने कभी ना कभी अपने जीवन में ये जो टॉपिक है वीडियो का वो एक सवाल है एक्चुअली, उसके बारे में यकीनन सोचा होगा। अच्छा। और ये वीडियो है कि अगर पृथ्वी के सारे लोग एक साथ पृथ्वी पर जंप करें तो क्या होगा? ओहो, ये तो सब सोचने वाली बात है। अरे ये भी कोई बात नहीं है, ये एक साथ सभी पृथ्वी के लोग पृथ्वी में जंप करे, ये कौन सी बात हुई है? तो ये सवाल जो है ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और सोचने है, मगर चाचा आप बताओ कि सब एक साथ कूदेंगे तो फिर क्या होगा? अब क्या होगा भाई, तो धरती फट जाएगी, वही क्या होगा? ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। इसमें वो बंदा फैक्ट बता रहा है कि ऐसा होना पॉसिबल है और अगर पॉसिबल है तो आखिर उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत सोचने वाली बात है। इसका रिजल्ट ही क्या आएगा? अब रिजल्ट जो भी आएगा वो आप देखने के बाद अपने को पता चलेगा। लगाइए आप। Hey, Vsauce, Michael here. And what if every single person on Earth jumped at the exact same time? Could it cause an earthquake, or would we not even be able to tell? Well, first things first, let's talk about the Earth's rotation. The Earth spins. It's why we have night and day, and it spins quickly. देखो उसने भी वही बात कर दी, अभी भूकंप आएगा कि क्या होएगा, मगर उसने बताया नहीं अभी। अब क्या वो जो घूमने का चक्कर जो बोल रहे हैं नहीं, यही घूमने का चक्कर पूरी धरती का फिर करेगा। ओहो। At the equator, the Earth is spinning at more than 1,000 miles per hour. Now, a spinning ice skater can speed up by moving mass closer to the center, and the Earth is no different. नहीं, क्या बात तो आपने ऐसे बताई कि साइंस वाली में बात है, ये बात तो हमको अभी तक पता नहीं थी कि आखिर ये क्या है। तो ये तो हमें मालूम था कि धरती गोल घूमती है, मगर ये जो आप चीज डिटेल में बता रहा हो ये हमें मालूम नहीं था, पहली बार मालूम पड़ा। In fact, if you get down on the ground right now and move your mass closer to Earth's center, technically you will speed up Earth's rotation, making this day shorter. Now, यानी ये समझना भाषा का पृथ्वी का घूमने से दिन और रात का खेल होता है। अब ये बात तो समझने पड़ा। अच्छा। The change that you would make to the Earth's rotation is way smaller than we could even measure, but it is calculatable, and the impact can be quite impressive when you talk about redistributing more mass than just one person. बहुत सारे लोग मिलके करेंगे तो प्रभाव तो लाएगा ही लाएगा भैया। For instance, last year, the earthquake in Japan redistributed so much of Earth's mass towards the center that every day since then has been 1.8 microseconds shorter. अच्छा। तो फर्क पड़ गया है, ताजुब की बात है, इतना फर्क। But that was a giant geological event. What can us humans do to the Earth all on our own? I mean, there are more than 7 billion of us now. What if we all got together in one place and jumped? भूकंप की जो बात थी ना, वो आपने जो बताई वो एक कुदरत वाली बात थी, लेकिन जब आप इंसानों की बात बताएंगे ऐसा कुछ ना, ये तो कोई होना नहीं है। इंसान एक ही काम कर सकता, वो है बम मारना बस। Well, what would that even look like? Interestingly, if you took the entire human population of Earth and had them all live in one place with the same density that people live in New York City, you could fit everyone, all of us, into the state of Texas. बस फिर तो कोई असर नहीं पड़ना भैया। मैं तो समझा था कि आधी दुनिया में आदमी आ जाएगा फिर कूदेगा, तो वो तो कुछ अलग बात थी। अब जब एक राज्य सब फिर हो जाएंगे तो क्या होना है, इतने बड़े धरती का आगे। But that's living, not standing around in a crowd, which is how we would probably want to do the jump. If every single person alive right now on Earth stood shoulder to shoulder, you could fit all of us into the city of Los Angeles. शहर के बराबर लोग कूद भी लेंगे तो क्या मुक्के मारेंगे जब भी कुछ नहीं होना भैया। अबे मुक्के तो छोड़, हथौड़े लेके भी अगर हथौड़े मारे तो भी जमीन का कुछ भी नहीं होना। It would be an incredible sight to behold. A mere 500 square miles वो तो सही बात। every single person on Earth. Okay, so then we jump. What happens? देखा? Unfortunately, not much. I mean, we're all awesome people here on Earth, but our collective mass compared to the mass of the entire Earth, it's like nothing. In fact, dot physics calculated
that if all of us were to get together in one location and all jump 30 centimeters into the air at the exact same time, we would push Earth away from us a tiny amount. अरे बाप रे भाई तो बहुत बड़ी बात हो गई ना भैया थोड़ी दूर तक तो ऐसे कितनी दूर तक भैया Earth would only move away from us about 1/100th of the width of a single hydrogen atom. And here's another thing. Because we are all jumping and then going back to where we started, Earth is just going to move back to where it started. कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि कुछ भी नहीं हो रहा है कुल मिलाकर आपका ये कहना है So our big jump won't be able to change Earth's position in space. But come on, 7 billion people all jumping together, that's got to be able to cause some sort of seismic activity, right? So let's say you have a lot of people all together in one place, and you have them all jump on 1, 2, 3. Did you feel that? Well, the BBC did this with 50,000 people and discovered that a kilometer and a half away, it only registered as a 0.6 on the Richter scale. अच्छा मैं 50,000 लोग अगर को दे तो कोई गतिविधि तो हो ही होगा शायद धरती को तहस-नहस कर दे या भूकंप आ जाए ऐसा कुछ नहीं होना है You would need 7 million times more people than even live on Earth right now to jump at once to recreate the earthquake that recently happened in Japan. अच्छा भैया अब इतने हम लाएंगे कहाँ से मेरे भाई मैं क्या तू लाएगा कहाँ से ये बता मेरे को बताओ एक जगह चाचा वो तो खाली उदाहरण दे रही है आप गुस्सा मत करो अरे यार So, even though we're all awesome, compared to the size of the Earth, we're not much. But don't get too discouraged. Our collective jump would contain a lot of energy. The Straight Dope calculated that even if only the people who lived in China got together and jumped, their jump would be the equivalent of 500 tons of TNT. वाह Of course, 500 tons of TNT doesn't do much to an Earth that weighs 6 sextillion 588 quintillion tons. अरे बाप रे बाप ये तो कमाल की मम्मा भैया यार मैं तो ये सोच रही हूँ इतनी बड़ी पृथ्वी का वजन तोला कैसे इतनी बड़ी तराजू ये लाया कहाँ से यार वाह यार To make yourself feel more powerful, pick a card. I've got 10 of them here. Let's say you choose this one. Boom. Congratulations. We have just decimated this deck of cards. Why? Well, because technically, decimate does not mean obliterate completely. Deci, 10. It means to take away 1/10 of something. So the next time you take a quiz and don't do so well on it, you only get 10%. Well, sure, that's an F. But by getting 10% of them right, you decimated that quiz. And since we've been talking about crowds, let's talk about YouTube crowds. YouTube audiences, that view count that you see at the bottom of every video, and get some perspective on it. We'll begin with Dunbar's number. It's an estimation of the maximum number of people we can have stable social relationships with at a given moment, and it's based on the size of our neocortex. बात तो आप बहुत अच्छी सी कर रहे हो जानकारी बहुत अच्छी सी दे रहे हो लेकिन मेन जो चीज अपना टॉपिक वो टॉपिक था धरती में वो कूदना वो टॉपिक से जो है आप भटक रहे हो यार उसको वीडियो से ही संबंधित उदाहरण देना चाहिए अलग उदाहरण नहीं देना चाहिए These aren't just acquaintances. These are people you have social contact with, a network where you know how everyone relates to everyone else. And the number is usually given to be somewhere between 100 and 230. Which means that when a YouTube video receives more than 230 views from different people, more people have seen that video than you could ever realistically hope to know well at a given moment. If a video has more than 100,000 views from different people, more people have seen that video than you will ever meet in your life. And by meet, I mean shake hands with, learn their name, talk. ये तो मुमकिन ही नहीं है भैया कैसे मुमकिन नहीं है भाई चाचा ये धरती का समझाने यूट्यूब का क्यों समझाने लग गया ये मेरे समझ में नहीं आई अरे मेरे खुद को भी समझ रहे वो टॉपिक क्या है बात खुद से कर दिया Talk to them for a bit. I mean, think of it this way. You and me, we are only statistically expected to live around 28,470 days. So even if you were to meet someone, 2, 3 people every day of your life, including when you were a baby, you still wouldn't meet as many people as have seen that YouTube video with 100,000 views. But keep this in mind. Even though you,
or even a large group of us, can't do much to change Earth's location or rotation, we can... नहीं यार, आप समझ में आया, आप तो तेरी तारीफ करने वाले के जो मिसाल दी ना, वाकई बहुत अच्छी, बहुत सही ढंग तरीके से दी है। अब तो तेरी तारीफ करनी ही पड़ेगी मेरे को यार। सही बात। बहुत अच्छा बोल रही है तू यार। affect it a little bit. Newton's third law guarantees this. If you weigh 150 pounds, the Earth is pulling you down with a force of 150 pounds, but you are also pulling up on the Earth with a force of 150 pounds. अच्छा, मतलब कहने का ये होगा जितना इंसान का वो वजन है, वो उतना ही वो वजन जब पृथ्वी उसको खींचती है। बताओ यार, लेकिन ये बात तो ये बहुत कमाल की बात है जिसका मेरे को आज पता चला। If you fall 3 meters, the Earth has pulled you down 3 meters, but you have also exerted a equal and opposite force on the Earth. Of course, it's a lot bigger. So if you fall 3 meters, you pull the Earth up about a billionth of the width of a proton. Which ain't bad. So the next time you move your body, the next time you jump, Felicia, think about this. You just affected the Earth as much as it affected you. You've got that kind of power. Speaking of power, you all should go check out Geek and Sundry, Felicia's new channel. It's सब ये बात आपने बड़े अजीब बात है कि अपन पृथ्वी जितना अपने जोर लगाए, अपन पृथ्वी पे उछले तो अपन भी उतना जोर पृथ्वी पे लगा रहा। बहुत पॉइंट की बात है भैया, आज तक मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। one of my new favorite things. And as always, thanks for watching. बोलो यार, ये बंदा वाकई बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छे तरीके से एक एक बात को इतनी बारीकी से समझा के गया और हमें समझने में बहुत मजा आया। और ये जो जानकारी ने जितनी भी दी है, वाकई में दिमाग से सोचने वाली बात है कि जो उन्हें बताइएगा वाकई में ऐसा है, ये क्या। तो इसने जो साइंस की बातें बताई हैं वो तो हम पूरी तरह से समझे नहीं है, और कुछ कुछ बातें जो है वो समझ में आई हैं, तो वो समझ के और देख के बहुत अच्छा लगा है हमें। बाकी ने ये बात सही बोले कि हम मोटे मोटे तो समझ में हमारे आया है, जैसे कि धरती के खींचने की क्षमता, धरती पे चलने की क्षमता, ये हम समझ नहीं है। और इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा कर धरती में कूदने भी है, कुछ भी कर ले, धरती का तो कुछ भी नहीं होना सही। तो इंसान ने एक चीज बहुत गलत बनाई है, वो है परमाणु बम। उससे तबाही मच सकती है और पूरी दुनिया और धरती नष्ट हो सकती है, और उसके अलावा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। क्या था भाषा ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि ये बात बिल्कुल सही कर, धरती पे कूद लो, विजय लो, कितने भी खोज लो, धरती को कुछ नहीं बिगड़ना है। हाँ, ये जो है परमाणु जो बम है, वाकई में ये धरती का कुछ अंश बिगड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही मजा आया और बहुत जानकारी देखने को भी मिली और सीखने को भी मिली, और इसके साथ अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए नमस्कार।